Okay, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Mm. Fine, I know it's a very short notice, so maybe students didn't turn up, but this is a very short calculations related to ANOVA. So basically, today we will learn the calculation, and I'll be dedicating one more class related to solving of MCQs. Okay, which is coming from ANOVA chapter. So ANOVA means what? What is the full form of ANOVA? Okay, ANOVA means analysis of variance. We are talking about variance here. So it's a collection of statistical models, okay, and certain procedures. Basically, we want to know the differences or analyze the differences among group means. Okay, this is very important. Why we are using ANOVA? We are trying to find out whether there is any difference between the means in a sample. And ANOVA was developed by the statistician Ronald Fisher. Okay, understood? Yes, ma'am. Fine. So if anyone asks you what does ANOVA mean, so the simple answer for ANOVA would be when we are trying to analyze the difference among group means in a sample, differences among means in a sample, then basically we are going to use ANOVA. So we are going to discuss one-way ANOVA. Okay, one-way ANOVA, or in your syllabus you have a word known as F test. So this F test is coming under ANOVA, or ANOVA, whatever calculations we are going to do, we will follow F test, F table. Okay, so TZF. Now this is a calculation, small calculation, hardly it will take 20 so like to complete. This is a question C. I have given you three machines, machine 1, machine 2 and machine 3. And these are the observations. Let's say day wise, first day, second day, third day, fourth day. So what I want to find out, I want to find out whether these machines are different in their mean speed or not. Okay, I want to find out whether there are any difference between the mean speed or not. There I am going to use ANOVA. So all of you write the question 28, 32, 30, 34, 31, 37, 38, 42, 30, 28, 26, 28. Wrote? Okay, we are going to solve one-way ANOVA through 6 steps. 6 steps. First step is your hypothesis. We have to frame hypothesis. So as I said, I want to find out whether the machines are different in their mean speed or not. So what will be my hypothesis? They are equal. They are not significantly different in their mean speed. What will be my alternate hypothesis? My alternate hypothesis will be they are significantly different in their mean speed. Okay? Understood, Krishna, Shweta and Akanksha? Yes, ma'am. Okay. I'm going very slow so that you people will be able to do this problem. Now my second step will be calculate mean. Okay, calculate mean for each of the cases and then calculate grand mean. Do all of you don't see the answer sheet? All of you do?
कर लिया आप लोग मीन? तो मशीन 1 का मीन कितना है? 28 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? 4. सो योर आंसर इज 31. सिमिलरली मशीन 2 का कितना है? 31 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 42 divided by 4. So we have 37 here. Machine 3 का 30, 28, 26, 28 divided by 4 that is 28. ठीक है, ये तीनों का इंडिविजुअल मीन है. ग्रैंड मीन हम कैसे निकालेंगे? तीनों का मीन डिवाइडेड बाय 3. So 31 plus 37 plus 28 divided by 3. So grand mean is equal to 32. Clear? Akanksha, are you calculating? No, ma'am, calculated. Okay. Shweta, what about you? Doing. Okay. Krishna, you can message me in chat also, no problem. Okay. Fine. So your next part is SS between. SS between. This is your third step. We will find sum of square between. SS means sum of square between, and we will find sum of square within. Okay, these are the two things we will find. This is step 3. Between, sum of square between. SS means sum of square, and SS within means sum of square within. This is step 4. Now how you are going to find out between? Between means what? Individual case and grand mean case. So the formula is, suppose there are 5 items, so what will be? N4. Okay, if there are 5 machines, same thing, like this, plus N5. Now we have 3, so we will here take 3 cases. N1, N is your number of observations, 4, mean 1, 31, minus grand mean, 32 square, plus N2 is your 4, mean 2, 37 minus 32 square, plus N3, 3 minus grand mean square. So we are going to find out the value of sum of square between. All of you do till this much, then we will find out sum of square within. Did you do till this much, both of you, or you are still doing the calculation? Ma'am, done. ओके श्वेता, आप कहाँ तक किए हो पा रहा है आपसे? श्वेता, Yes, ma'am. कहाँ तक कर पाए? I'm step 3 में हूँ. अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करो. नाउ स्टेप 4. स्टेप 4 में विदिन है, मतलब इंडिविजुअल आइटम माइनस देयर मीन. मतलब कैसे होगा पता है? x11 इंडिविजुअल आइटम्स माइनस उनका मीन, x1 स्क्वायर. समझ में आया? सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा आकांक्षा?
क्या होगा नेक्स्ट? कुछ समझ में आ रहा है? x12 माइनस x बार 1 स्क्वायर। सो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं यहाँ पे इसको माइनस दिस वन स्क्वायर, फिर दिस वन माइनस दिस वन, दिस इज नोन एज 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, सेकेंड कॉलम 2 1 2 2 2 3 2 4, थर्ड 3 1 3 2 3 3 3 4। समझ में आया हाउ वी आर डिराइविंग दिस? एनी डाउट्स? Clear, ma'am. हाँ, सॉल्व करो। श्वेता, समझ में आया ये वाला स्टेप? हाँ मैम कर रही हूँ। हाँ, करो। We are individually finding out, okay? फिर यहाँ पे होगा आपका x14 माइनस x बार 1 स्क्वायर प्लस Subhajit, you attended late. Krishna Ranjan was there. Okay. फिर क्या होगा? x21 माइनस, यहाँ से just try to learn from here and you can see the first parts through your recordings. ये होगा आपका सेकेंड मीन स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली x3 का क्या होगा? x31 माइनस मीन 3 square. Okay, just let me know the calculations. Let me know the calculations, all of you. इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है आप लोग बताओ मेरे को। इसके बाद हम लोग और एक चीज निकालेंगे, एस एस टोटल। ओके, कैलकुलेशन समझ में आया?
Okay, what is the value? कोई नहीं किया है अब तक? Ma'am, it is coming out 90. 19. Yes, ma'am. 1 नहीं. No, ma'am, 90, 90. 90. Okay, देखेंगे. Shweta, what about you? श्वेता, समझ में आ रहा है इस ये वाला पार्ट? ओके. अच्छा श्वेता, आप अनम्यूट करोगे प्लीज? यस मैम. हाँ, मेरे को थोड़ा वैल्यूज बताओगे, क्या क्या वैल्यूज आपने डाला? शुरू. हाँ बताओ. आप किए हो तो? हाँ, मैं लिख के दे दूं आपको? कर पाओगे तो लिख लो. सुभजीत, have you tried this? No, ma'am. Okay, see this x11 means this one. x12 means so first row, first column, second row. मैट्रिक्स में हम लोग नहीं डालते हैं. The same way we have done here. 1 2 1 3 1 4. This is your 2 1 2 2 2 3 2 4. This is your 3 1 3 2 3 3 3 4. And they have their respective means. ठीक है. पहला M1 का मीन है 31. This is M1. सेकेंड M2 का मीन है 37. थर्ड M3 का मीन है 28. ठीक है. So I have just given you a formula. x11 minus mean 1 square. अब हो सकता है x11 क्या है 28 माइनस मीन 1 कितना है 31. 1. So similarly we have to apply. सेकेंड वाला क्या होगा 32 माइनस 31. श्वेता, हाँ मैम, मेरा 12 वाला वैल्यू रॉन्ग हो गया था. अब कितना आ रहा है आपका आंसर? एक सेकेंड मैम, मैं करती हूँ. हाँ हाँ. अब ये वाला कितना है 30 माइनस 31, राइट? 34 माइनस 31. हाँ. सुभजीत, अब नाउ यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. 34 माइनस 31. फिर नेक्स्ट क्या होगा? मैंने क्या बोला है कि 211. 21 क्या है आपका 31. 31 माइनस 31 माइनस 37, 37. राइट? फिर उसके बाद क्या होगा? सेकेंड वैल्यू क्या है 37 माइनस 37 स्क्वायर, राइट? फिर उसके बाद आएगा आपका 38 माइनस 37 स्क्वायर. अब समझ में आया? Yes, ma'am. सुभजीत, हाँ. So same way you have to find out the calculation. Shweta, now what answer मैम, you ये got? पूरा का करना है ना? हाँ पूरा. Now what is your answer that you got? 42 minus 37 square. Okay. 31 क्या होगा 30 माइनस 32 स्क्वायर. नहीं मैम, 28 ना. अच्छा हाँ सॉरी 28. 32 ग्रैंड मीन है आपका 28. सॉरी. श्वेता, टोटल कैलकुलेशन करके वैल्यू बोलो मेरे को. आपका आंसर पहला वाला गलत है. नेक्स्ट है दिस वन 28 माइनस 28 स्क्वायर, राइट? Shubhajit, you also calculate. Now you know. Yes, ma'am. And tell me the final answer. Yes, ma'am. Trying. Plus 28
Do this. वैल्यू नहीं निकला अब तक। Shubhajit, what's your value now? Yes, ma'am. Trying. Okay, Shweta, अभी फाइनल आंसर बोलो। Okay, the answer is 90. Okay, Akanksha got the correct answer. The answer is 90 if you solve everything. This is your step 4. तो step 3 में आपने क्या किया, आप between निकाले, step 4 में आप निकाले within. अब step 5 है, step 5 में what we are going to do, see. Step 5 में we will find out SS total. Now I will say you 2 ways how you can find out. This is a cross checking point. आपने स्टेप 3 और स्टेप 4 में वैल्यू ठीक ठाक किया है कि नहीं, यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, पहले लॉन्ग मेथड फिर छोटा वाला मेथड। या शुभजीत करेक्ट। सो एसएस बिटवीन में हम, एसएस टोटल में हम क्या कर रहे हैं, द फॉर्मूला इज एक्स आई जे माइनस ओके फिर एक्स आई जे माइनस मीन, आपका टोटल मीन का स्क्वायर, राइट। नाउ अप्लाई, तो एक्स आई जे मतलब x11 माइनस 32, राइट। सो x11 इज हाउ मच, 28 माइनस 32। उसके बाद क्या होगा, x21 माइनस 32 स्क्वायर, मतलब 32 माइनस 32 स्क्वायर। समझ में आ रहा है आकांक्षा, श्वेता एंड सुभजीत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्वेता नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू। Yes, ma'am. डू इट, डू दिस, सॉल्व दिस। 30 माइनस 32 स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या होगा, 34 माइनस 32 स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 कंप्लीट, मशीन 1 का कंप्लीट। अब मशीन 2 का निकालेंगे। मशीन 2 का पहला वैल्यू क्या है, 31 माइनस 32 स्क्वायर, राइट। फिर होगा आपका 37 माइनस 32, नेक्स्ट होगा आपका 38
minus 32. Next will be 42 minus 32 square. 42 minus 32 स्क्वायर. समझ में आ रहा है सबको? फिर हम मशीन 3 में जाएंगे. मशीन 3 में we will put 30 minus 32 square plus 28 minus 32 square plus 26 minus 32 square plus 28 minus 32 square. ठीक है, इतना आप निकालो. Do the solve, do the solution and let me know the answer. Okay, Akanksha 258, right? Subhajit and Shweta, what are the values? What are your values? Ma'am, 1 minute. हाँ हाँ बिल्कुल.
239। श्वेता, वैल्यू कैलकुलेशन कहाँ पे आप गलत की हो? द आंसर इज 258 एक्चुअली। मैम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो। हाँ, पहले का आएगा 16 प्लस 0, दिस इज 16। ओके, आई एम टेलिंग द स्क्वायर। 4 ये है ना, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 100 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 16। ओके मैम, आ गया। ठीक है। अब नाउ व्हाट आई सेड, आई विल लेट यू नो अ मेथड हाउ टू क्रॉस वेरीफाई। नाउ एसएस टोटल का फॉर्मूला है, इतना ना करके आप क्या कर सकते हो, एसएस विद इन का कितना वैल्यू था? 90 और एसएस विद इन का वैल्यू कितना था? 160। नहीं, एसएस विद इन का था 90 और बिटवीन का था 160। आप इन दोनों को टोटल करो तो plus 168. Just do the total. The value will come to 258. Okay. Clear? तो ये वाला और ये वैल्यू अगर आपका एक समान आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। सो आपके पास अभी 3 वैल्यूज है, एसएस टोटल, एसएस विद इन, एसएस बिटवीन। अब हम इसको टेबल में सजाएंगे। नाउ सी, जस्ट क्रॉस चेक कहां पे आप लोग मिस्टेक किए हो। नेक्स्ट वी विल गो टू स्टेप 6। नाउ स्टेप 6 में इतना आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 रोज एंड वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज। लास्ट को ही हमको कैलकुलेट करना है। सब लोग टेबल कर दिए? हैव यू ड्रॉन द टेबल? यस मैम। तो टेबल में सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में क्या क्या रहेगा? बिटवीन सैंपल्स, विद इन सैंपल्स। सी हियर, बिटवीन सैंपल्स एंड विद इन सैंपल्स एंड टोटल। ठीक है, बिटवीन, विद इन एंड टोटल हम लोग निकाले हैं। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, वैल्यू बस डाल दिए हम, सम ऑफ स्क्वायर विद इन वैल्यू डाल दिए, सम ऑफ स्क्वायर टोटल 258। ठीक है, जस्ट आई अप्लाइड द वैल्यूज। क्लियर? यस मैम। Now we will find degrees of freedom. Now the formula for degrees of freedom between samples is k minus 1. K means column minus 1. ठीक है, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन सैंपल का फॉर्मूला है n माइनस के। राइट, एंड टोटल का फॉर्मूला है n माइनस 1। मैम के कॉलम है। हाँ, के कॉलम है। n है आपका कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n।
हो गया इतना? Degrees of freedom complete? Yes, ma'am. Next we will find out mean sum of square. Now what is the formula of mean sum of square? S is between divided by k minus 1 and S is within divided by n minus k. मतलब this second column divided by third column. Second column divided by third column individually. ये हो गया आपका mean sum of square. हो गया मैम. उसके बाद F टेस्ट जो हम बोल रहे थे और F रेशियो कैसे निकालेंगे? MS between divided by MS within. This one divided by this one. Okay. Subhajit, able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, seeing the F table, I don't think I have the F table with me here. Yes, I don't have the F table here. If you see the F, I can send you in WhatsApp. If you will see any F table, what you will find out, you will take 2 and 9, the degrees of freedom. This side you will check 2 and this side you will check 9. The value will come to be 4.26. Okay, this is the table value. Like the ways we were seeing in chi-square, this is the F table. This is your calculated value. This is your tabulated value. So what is happening here? Calculated value is greater than tabulated value. When calculated value is greater than tabulated value, what will happen? Null hypothesis will reject. Reject null hypothesis. Now, if null hypothesis is rejected, that means what? Alternate is accepted. That means the machines are significantly different in their mean speed. This is proved now. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, Bajit, did you understand? Yes, ma'am. Oh, okay, fine. So all of you practice and practice. Akanksha and Shweta, please stay back. Subhajit, do you have any more doubts? No, ma'am. Okay, thank you. So you can leave for the next class.